हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्री बोर्ड्स की तैयारी में लगे होंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज क्लास 10 के सिलेबस की फॉग। ये फर्स्ट फ्लाइट में है। ये पोम छोटी सी पोम है, लेकिन अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो जो पोएट हैं फॉग के पोएट हैं कार्ल सैनबर्ग। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट और ही इज़ नोन एज द पोएट ऑफ द पीपल बिकॉज ही was like a mouthpiece for the American people of the 20th century, and his poetry is still relevant. जो इनकी लिरिकल क्वालिटी है, जो इस पोम में रिदम नहीं है, राइम नहीं है ना। तो ये पोम तो फ्री वर्स में है, बट अदरवाइज इनकी पोम में म्यूज़िकल क्वालिटी होती थी, इमेजरी बहुत ब्यूटीफुल होती है, जो कि इस इमेज पोम में भी हमें देखने को मिलेगी। एंड ही वॉज ऑल्सो वर्सटाइल राइटर। वर्सटाइल मतलब वो एक ही तरह का जॉनर नहीं लिखते थे, वो तरह तरह के जॉनर्स में लिखते थे। तो ये चिल्ड्रन स्टोरीज भी लिखते थे, पोइट्री भी लिखते थे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और आर्टिकल्स, ये सब भी लिखते थे। सो ही इज़ नोन as a journalist and as an author and as a poet as well. And he was born in Illinois on January 6th, 1878, and he passed away on July 22nd in North Carolina. तो ये देखते हैं हम पोम। पोम तो ये है छोटी सी। The fog comes on little cat feet. It sits looking over city and harbor on silent haunches and then moves on. Fog क्या है? Fog एक thick cloud होता है which is formed near the ground. ठीक है, कोहरा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, haze, mist, ये fog होता है। अब जो हार्बर है, हार्बर पे फॉग आया है, लेकिन उन्होंने फॉग को एक एनिमल से कंपेयर करा है। और वो कंपैरिजन ऐसे नहीं बोला इन्होंने कि द फॉग इज लाइक, उन्होंने बोला है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कैट फीट, वाई कैट फीट? बिकॉज इट डजेंट मेक एनी नॉइज। ओके, द कैट डज नॉट मेक एनी नॉइज, तो द फॉग ऑल्सो कम्स लाइक दैट, इसलिए उसको बोला है on coming on little fog, cat feet. और it sits looking over city and harbor on silent haunches. Haunches क्या है? ये पिक्चर में देखिए, haunches means the loin and the leg considered together. ये जो पूरा पार्ट होता है ना, जिसपे जानवर बैठता है, गाय, बिल्ली, डॉग्स, ये जैसे बैठते हैं, तो जिनके जो पीछे का जो पूरा पार्ट होता है ना, टेल के नीचे से लेकर के, ठीक है, लेग्स तक का, इसको कहते हैं haunches। ठीक है, तो ये हो गया फॉग का मीनिंग और हॉन्चेस का मीनिंग क्लियर। अब ये जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये आपको इजीली कहीं पे भी मिल सकती है। ये जो इमेज है, ये इट इज़ रिटन इन द हैंड राइटिंग ऑफ कार्ल सैनबर्ग। सो कार्ल सैनबर्ग्स पोम फॉग, इट्स अ mere 6-line poem. Okay, it is written in free verse and it is an expression of finding beauty in an ordinary world. फॉग के थ्रू जब हम वर्ल्ड को देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल और मिस्टिकल लगता है, बट फॉग इटसेल्फ वो कैसी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे पोइट ने क्या करा है, फॉग को कंपेयर करा है एक कैट से, ठीक है, उसके मूवमेंट को। ठीक है, नाउ द मूवमेंट बिटवीन लाइन ब्रेक्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पोम्स ट्रांजिशन बिटवीन मूड्स। सबसे पहले तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फिर ब्रेक है ना। सो इट बिगिन्स विथ एन एंटिसिपेशन कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, व्हाट वुड हैपन, है ना। इट लीड्स अस टू अ सॉर्ट ऑफ एंशियस अनसर्टनिटी कि इसके आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, द फॉग कम्स। और फिर वो एंड कैसे होती है, इट मूव्स ऑन, मतलब इसमें कुछ भी आगे नहीं बचा है। देर इज नथिंग एल्स टू पॉन्डर ओवर। It comes, it sits looking over the harbor and then it moves on. So the beauty of the poem is not in the description of what the harbor is looking like or how things are looking like through the fog. No, okay, that is not the
the theme here. The theme is the comparison of fog, which is an element of nature, with that of another element of nature, another part of nature, that is a cat. ठीक है? So, just like a cat sits quietly on its haunches, and it is the movement of the cat is not, it does not attract attention. Likewise, the fog also comes and goes. You cannot pinpoint a time or the action of the fog coming and leaving. It comes and goes as silently as it comes. Now, which is the device that has been used over here? Which poetic device? The poetic device that has been used here is metaphor. Okay, it's not a simile. Okay, he does not say that the fog is like a cat. He says the fog comes like the fog comes on little cat feet. Okay, so this is the subtle way in which he is making a comparison between the two things. Which two things? A fog and a cat, which are completely dissimilar things. But see how he finds out a point of similarity between these two things. Okay, so and I have added a description of how a simile is different from a metaphor. You can read it also. Now, see, apart from the movement of the fog, कि कितनी silently आ रही है जा रही है, ठीक है, इसके अलावा fog में ना there is a sense of unpredictability. You do not know when the fog will come and when it will leave. Okay, there is a sense of mystery around a fog, and it can be scary also. ठीक है, if you see in the movies how the fog is shown, it is shown not only to show the beauty of the place, but sometimes it helps to increase the scariness of the place, or to increase the fear element in something. ठीक है, and this is also which is common between the fog and the cat. So the fog can also be mysterious. Fog भी mysterious हो सकती है. Okay, fog unpredictable हो सकती है. Fog scary हो सकती है. जैसे कि एक cat भी हो सकती है. Cat की ही तरह it can come from nowhere and can just land right there, and then you see अच्छा fog आ गई है. ठीक है, like that. There is no warning, there is no trumpet blowing about it. It's not like the rain which is heralded by a lot of thundering and lightning. It's not like that. ठीक है, fog तो silently आती है और silently कोहरा उड़ जाता है. You don't come to know. And then again, like a stealthy cat, है ना, it moves on, leaving us in awe, and we wonder where it will go next. And that's all it is. There is to it. It ends over there. Now, because the poem is very, very short and the description is not much, I've added a few questions here for you. So, what is the question? What does it in the third line refer to? Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. And the third question is, does this poem have a rhyme scheme? ठीक है, ये questions है. तो आप questions देख के लिख लीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे questions और answers अलग slides पे देने चाहिए थे. I forgot to do that. Anyway, so the first answer is that it in the third line refers to fog. अब क्या होता है, ये बहुत ही common error होती है which students make. They say that it in the third line refers to the cat, but no. The poet is talking about the fog and the fog only. Okay, the subtle comparison is with a cat, but he is all the time talking only about the fog. फिर does he actually say that it is like the cat? No, he never says anywhere that it is actually like a cat. He just implies this. He just gives us this idea with the help of the metaphors that he chooses. Okay, so what is it that he says that tells us that the fog is compared to a cat here? So the fog comes on little cat feet. This is one. It sits silently on its haunches like a cat, है ना?
and then it moves away silently. So this is what tells us that this is a cat that he is comparing it to. And the third question is, does the poem have a rhyme scheme? No, it doesn't have a rhyme scheme. It is a free verse poem. ठीक है? So this is it. I hope you liked the video. Please keep coming back for more. Thank you so much for watching. Bye bye.